Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine with the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Today we have to discuss about some supervision strategies that is known as the differentiated strategies. You are required to listen carefully and do have paper and pencil with you wherever you need to ask something or you have any query. Note it. After listening it, this video recording on Google Meet, we should have a discussion in detail about the points. What are you, whatever you have to ask about. As far as differentiated supervision is concerned, basically it's an approach to teacher learning that offers option for the type of supervision, professional development that they receive depending on their needs, experience, knowledge, and skill level as aligned with the educator effectiveness model. So all of the efforts the teacher made towards making learning efficient, rather its supervision, its professional development, or it depends on the experience, knowledge, and skills. It those are aligned with mean उसके according है उसके objective of educator effectiveness model के according होंगे. Differentiated supervision is effectively using evaluations to provide meaningful feedback to teachers based on their individual needs and level of expertise. It occurs when school leaders recognize the teacher vary greatly in their readiness level, skill sets, and their confidence, resulting in insignificant variation in teacher effectiveness. The goal of supervision process is to have teachers become self-directed and assume full decision-making responsibility. इसे एवेल्युएशन के पर्पस के लिए टीचर्स यूज करते हैं बेसिकली और सुपरवाइज करने के लिए एंड टीचर्स को सुपरवाइज करने के लिए यानी एवेल्युएट करने के लिए दिस टाइप ऑफ सुपरविजन इज टेकन इनटू प्रैक्टिस. जब स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर की कुछ एबिलिटीज़ को हाईलाइट करते हैं कि ये रेडीनेस लेवल है उनका और उनकी स्किल्स देखनी हो और उनका कॉन्फिडेंस जिसके रिजल्ट में टीचर की इफेक्टिवनेस के अंदर वेरिएंसेस आती हों, चेंजेस आती हैं, उस वक्त इसको यूज़ किया जाता है. बेसिकली इसका गोल जो होता है ये उसके तहत टीचर सेल्फ डायरेक्टेड हो जाते हैं. वो खुद अपने अपने अंदर चीज़ों को एनालाइज करते हुए समझते हैं कि स्किल की डेफिशिएंसी और कहाँ उन्हें मोर फोकस करना है और चीज़ों को बेटर करना है. There are different prevailing supervisory approaches, out of which some of them are enlisted here. Number one, directive approach, directive, informational, collaborative, non-directive.
Let's discuss in detail what is directive approach and directive information है collaborative ये क्या होता है. In directive approach of differential supervision, the supervisor takes direct ownership of the problem and the corresponding solution. It's very self-explanatory as it is stated that here in directive supervision differentiated approach, सुपरवाइजर बराह रास्त उसका जिम्मेदार होता है और कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन भी देना उसकी जिम्मेदारी होता है. द रोल ऑफ सुपरवाइजर इज वेरी पर्सपेक्टिव एंड एक्टिव. एस्क्राइब भी करना है और एक्टिवली उसने प्ले भी करना है. दिस अप्रोच इज यूज्ड with truly struggling teachers or for teachers with limited or no experience. Supervisor takes direct ownership of the problem and the relevant solution he provides. Uh, in a nutshell, in a directive approach, supervisory approach, actually novel teachers, prospective teachers, and new in the field who are struggling for their career and for their making efforts to have some more experience. So to upgrade their limited experience, directive supervisory approach is adopted by the supervisor. They give them direction to do this, or avoid from following. अकॉर्डिंगली उनके जो सोल्यूशन है उनका जिम्मेदार भी वो होता है, क्योंकि जो टीचर है वो तो नया है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं है, तो टोटली उसको डायरेक्शन सुपरवाइजर की तरफ से मिलती है. इस तरह की अप्रोच को डायरेक्टिव सुपरवाइजरी अप्रोच कहते हैं. डायरेक्टिव इनफॉर्मल, this approach is used to help guide teachers as they become more confident in their teaching style and strategies. A supervisor is still very active and responsible. This approach is primarily used with new teachers in their first or second year of teaching. So after induction of the teacher, no doubt they have sought a certain type of training from the institution where they were enrolled during their B.Ed courses, MPhil, or whatever the professional training they started. But practice is different from that very much experience where they were learning. In the field, they have put their efforts into practice or better performance. So within their beginning years of सर्विस, फर्स्ट और 2 years तक उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है. डायरेक्टिव इन्फॉर्मल अप्रोच में उन्हें सुपरवाइजर जो है वो इन्फॉर्म करता है कि आपको यहाँ यहाँ पे इश्यूज हैं, उन्हें गाइड करता है उन इश्यूज को रिमूव करने के लिए, और उन्हें हेल्प आउट करता है फॉर फर्दर अपग्रेडेशन. In collaborative approach, supervisor and teacher work closely together. One, there is a senior teacher and there is a co-teacher or junior teacher. So as a junior, he is attached with the senior one and learn from his experience, his skills, and enhance his capacity. The supervisor helps the teacher to explore all possibilities, but the final decisions are made by the teacher. This approach is used when teachers are functioning at mixed level or have the same level of expertise. या तो इसमें लोगों के कोई मोर और लेस डिफरेंस के साथ मिलते जुलते एक्सपीरियंस होते हैं, इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को गाइड करते रहते हैं. ये कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है, साथ मिलकर काम करते हैं. It can also be used if teachers and supervisors are working to solve the same problem. Then again,
वहाँ पे जहाँ कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन मोटिव है, उसको अचीव करने के लिए अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। नॉन डायरेक्टिव अप्रोच में द डिसीजन बिलोंग्स टू टीचर, द सुपरवाइजर स्टिल प्ले अ रोल बट इट्स डिफाइंड बाय द टीचर। टीचर के डिफाइंड रोल के अकॉर्डिंग जूनियर टीचर ने वहाँ पे रोल प्ले करना होता है, और सुपरवाइजर जो है उसको वॉच कर रहा है अकॉर्डिंगली, उस रोल के अकॉर्डिंग जो टीचर ने डिसाइड किया था। द सुपरवाइजर असिस्ट्स द टीचर इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग थ्रू हिज or her actions. This is used when teachers are functioning at high level. High level mean regarding their seniority or in grade level or assignment level. उस लेवल पे उन्हें सुपरवाइजर ने सिर्फ जस्ट वॉच करना है, जो टीचर ने खुद अपना रोल असाइन किया है उसको, उसकी कंप्लीटमेंट को देखना है कि वो किस हद तक हो चुका है या नहीं। इंटरफेयर नहीं करते यहाँ पे सुपरवाइजर्स। There are some advantages of differentiated supervision. It gives teachers ownership of goal setting. डेफिनेटली इसमें टीचर्स को लिबर्टी होती है कि वो अपने खुद गोल सेट करें। It matches teachers' skill level and experience with their professional development. जो उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है और उनकी जो स्किल है उन दोनों के अंदर तालमेल होता है। It motivates teachers as professionals to stretch beyond their current level of performance, proficient to distinguish in a non-threatenal environment. इस तरह के environment में के threatening issues तो नहीं होते, collaborative, positive and conducive environment होता है जहाँ पे टीचर्स को मोटिवेशन मिलती है ताकि वो अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सके। Advantages for schools: it builds bridge across classrooms, reducing teacher isolation and fostering a more collaborative workplace. No doubt, जब आप डायरेक्शनल, इनफॉर्मल और कोलैबोरेटिव सुपरविजन में है तो इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कोलैबोरेशन बढ़ता है और उनका आइसोलेशन जो टीचर का पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। टीचर के जो कंसर्न हैं वो आपस में ब्रिज होते हैं across the classroom and otherwise as well. It capitalizes on sharing the talent and expertise of diverse faculty through opportunities for job-embedded learning. अल्टीमेटली स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि उससे शेयरिंग का एक कल्चर जो है वो डेवलप होता है और उसके वो एसेट्स में इजाफा होता है, एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो मूव कर रहे होते हैं। इट मेक्स बेटर यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टाइम, स्पेशली विद द इंटेंसिटी ऑफ द न्यू टीचर एंड एवेल्युएशन मॉडल। इसमें फ़ायदा किसको है मेजर? स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन को और साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेटर को। वो कैसे कि बजाय इसके के साथ या वो लोग जो एक दूसरे के साथ नहीं हैं वेल कोलैबोरेटेड, वो टाइम को मिसयूज़ करें और अनवांटेड किस्म की वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, इस तरह का टाइम ही स्पेयर नहीं होता उनके लिए। वो क्योंकि कोलैबोरेशन में एक दूसरे से सीख रहे होते हैं और एवेल्युएट भी हो रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। It enhances student learning by stimulating teacher learning. It nurtures and nudges. इनके इस एनवायरनमेंट की वजह से स्टूडेंट की लर्निंग का जो प्रोसेस है वो एक्सटेंड होता है। डिफरेंशिएटेड टीचर सुपरविजन कैलेंडर को अगर हम देखें तो आप देखो सितंबर में
शुरू हो रहा है ईयर, एकेडमिक ईयर, और मई तक जाएगा। जून जुलाई अगस्त हैं, ये 3 महीने यहाँ छुट्टियाँ शो हो रही हैं। इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं कि फॉर्मल, पीयर कोचिंग, सेल्फ डायरेक्टेड एक्शन रिसर्च, पोर्टफोलियो, और फिर फाइनली है परफॉर्मेंस। फॉर्मल में नॉन टेन्योर टीचर्स, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, 1 ऑब्जर्वेशन पर सेमेस्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मंथ में जहाँ स्टार्ट लेना है वहाँ क्या है, SLO क्वालिटी असेसमेंट ट्रेनिंग करवाई जाए उनकी। स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है किस तरह बनाने हैं, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, उनको मेजर कैसे किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग, ताकि उन्हें पता हो कि जब हमें क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना है, तो सुपरवाइजर ने या ऑब्जर्वर ने इन स्टैंडर्ड्स को देखना है कि क्या वो मीट हो रहे हैं। अगर मीट हो रहे हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी है, अदरवाइज उसमें उसको गाइड करना है कि आप इसमें कोई डायरेक्शन देनी है, इन्फॉर्म करना है, वट। सो ये देखें यहाँ वो कह रहे कि अक्टूबर इन सर्विस SLO रिव्यू ड्यू बाय अक्टूबर 15। तो ये इसमें अक्टूबर के महीने को तकसीम किया हुआ डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्या करना है। 15 अक्टूबर तक के पहले 2 वीक्स के अंदर एक SLO प्रोसेस टेम्पलेट है, उसको सब स्टाफ ने फिल करना है, देखना है, उसके अकॉर्डिंग लर्न करना है, मॉक प्रैक्टिस करनी है, परफॉर्मेंस करनी है, वो मेजर होगी। और फिर इंडिविजुअल एक्शन प्लान प्रेजेंट होगा, उसको देखा जाएगा जैसे इलेक्शन अपना। एंड देन पोर्टफोलियो मोड के कौन कहाँ तक है, फिर उनका सेल्फ डायरेक्शन एक्शन प्लान के अप टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड without any uh, direction of a supervisor. Then they have to go for an action plan and SLO press template reviewed by the October 30। तो ये अक्टूबर का पूरा महीना इन 4-5 प्रोसेस में से गुजरना है कि वो SLO बनाएं, रिव्यू करें, शेयर करें, डिस्कस करें, उसका एक्शन प्लान दें, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डायरेक्टेड एक्शन प्लान, पोर्टफोलियो रिव्यू, एंड फाइनली टू इम्प्लीमेंट टुवर्ड्स दैट। दैट इज अबाउट द सुपरविजन। और फिर आप देख रहे हैं कि आगे नवंबर में उसका फॉर्म 82(1) यानी टीचिंग प्रोफेशनल्स के हवाले से और नॉन टीचिंग प्रोफेशनल्स का जो रोल प्ले है ड्यूरिंग द स्कूल ईयर, वो किसने क्या क्या काम करना है, ये इसमें डिसाइडेड है। तो जनवरी में जाके मिड ईयर कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे आप जाके वो हम सबको मिला के एक पॉइंट ऑफ व्यू की उस वक्त तक की परफॉर्मेंस वो आपस में शेयर करेंगे। उसमें जो शॉर्ट कमेंट्स हैं वो हाईलाइट होंगी, उन्हें गाइड किया जाएगा, और जो उनकी अचीवमेंट्स हैं जो उनको एडमायर किया जाएगा। एंड देन फाइनली एंड ईयर जा रहा है मई में, वहाँ जाके फिर एवेल्यूएशन कॉन्फ्रेंस होगी, कौन कहाँ खड़ा है, किस यानी सुपरवाइजर जो है वो टीचर्स की एवेल्यूएशन इस तरह से करें। तो डिफरेंट जो सुपरवाइजरी डिफरेंशिएटेड मॉडल्स दिए गए थे उनको बाय द मिड ऑफ मई फाइनलाइज कर दिया जाएगा। फिर रिव्यू करके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको चेंज करके दोबारा से इम्प्लीमेंट। दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, रुकता नहीं है। थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द कैरियर चलता है, और थ्रू आउट द कैरियर जो है सुपरविजन एंड एवेल्यूएशन का प्रोसेस होता रहता है, बट एट लीस्ट ट्वाइस a year with mid year and फाइनल एग्जाम के साथ इनको अटैच किया जाता है। व्हाट इज सेल्फ डायरेक्टेड टीचर ग्रोथ? It is lifelong process. It's a way for people to assess their skills and qualities, consider their aims in the life, and set goals in order to realize and maximize their potential. It's a step-by-step process that will help you identify what it is really want
what's preventing you from getting it, and how to break through any barriers to take action and transform your life forever. सेल्फ डायरेक्शन टीचर ग्रोथ बेसिकली टीचर इसमें अपने करियर का, अपने परफॉर्मेंस का, स्किल्स का, क्वालिटीज का खुद जायजा लेता है, खुद असेस करता है और अकॉर्डिंगली अपने टारगेट फिट करता है कि मैंने ये टारगेट्स अचीव करने हैं, जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ और उसके पोटेंशियल को अपग्रेड करते हैं, जिसकी वजह से उसकी वर्थ बनती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ऑन विद इन अ डे और विद इन आवर्स इसको नहीं किया जा सकता। ये थारोली डे बाय डे, वन आफ्टर द अदर स्टेप, एक एक कंपोनेंट को पहले कवर किया, एक्चुअलाइज किया, फिर साथ प्रिवेलिंग अदर को लेके तो चलते रहे। और ये फॉर एवर अक्रॉस द लाइफ होता है। जिस तरह इंसान के बारे में हम मज़हब में भी देखते हैं कि झूले से लेके, माँ की गोद से लेके कब्र की लहद तक इंसान सीखता है, इल्म हासिल करता है। तो ये स्किल्स और लर्निंग और स्ट्रेटजीज जो हैं, ये भी एक इल्म है। ये भी टीचर अपने प्रोफेशन को स्टार्ट करके तो उसके इख्तिताम तक इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, सीखता है और उसको एक्चुअलाइज करता रहता है। या दूसरे अल्फाज में ये हम कह सकते हैं कि ये कोई रुकने वाला अमल नहीं है, उसको चलते रहना होता है। फैक्टर्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ग्रोथ: नॉलेज, skills, attitude, competency. These are the factors of self-directed growth. Actions for self-directed growth. Self-directed learning, collaborative learning, reflective practices, and experiential learning. Let's see in detail what is self-directed learning. Herein, self-directed learning, an individual takes the initiative and responsibility for what other individuals select, manage, and ensure their own learning activities, which can be pursued at any time, in any place, through any means, at any age. In school, teachers can work towards SPL at stage at any time. तो ये टीचर की एक अपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है जिसमें उसने अपने आप को डालना है। किसी वक्त, किसी उम्र में, किसी सिचुएशन में, किसी भी अदारे में वो उसको जब चाहे कर सकते हैं, और ख़ुद ही उसने इसको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल्स को कि ये कहाँ करोगी, किन लोगों पे होगी, कैसे मैनेज करेगा, और फिर उनकी लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या होंगी, एंड फाइनली किसी वक्त पे उसको वो परसू कर सकता है। Collaborative, as it is very clear from the term collaborative, it refers to an instruction method in which learners at various performance levels work together in small groups towards a common goal. The learners are responsible for one another's learning as well as their own. Thus, the success of one learner helps other students to become successful. Collaboration में यह है कि एक कॉमन माहौल में लोग इकट्ठे बैठ के काम करते हैं एक सिचुएशन में, और इसमें दो तरह की सक्सेस होती है। एक उनकी इंडिविजुअल सक्सेस और दूसरे अपने पीयर्स की सक्सेस। पीयर की सक्सेस कैसे, जिस तरह हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन द क्लासरूम सेटिंग, जो रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, जो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से और जल्द समझते हैं, उनको हम दूसरों के साथ ग्रुप्स में डाल देते हैं। इससे उनकी अपनी लर्निंग नहीं रुकती, वो मज़ीद बढ़ती है, लेकिन जो ग्रुप वाले बाकी लोग हैं वो थोड़े अपग्रेड हो जाते हैं। और असेस करते हुए हम इनको लीडर्स को थोड़ा बेटर वे में ग्रेड असाइन कर देते हैं। सो कोलैबोरेटिव लर्निंग में मिलजुल के सीखने का अमल है, जिसमें
अपनी लर्निंग को भी इनहेंस करना है, मॉडिफाई करना है, एक्चुअलाइज करना है और दूसरों को सपोर्ट करना है, साथ लेके चलना है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, in its simplest form, thinking about reflection on what you do. It closely linked to the concept of learning from experience, in that you think about what you did and what happened and decided that what you would do differently next time. इसमें अपने रिजल्ट्स को देखना है, अपने इनपुट को देखना है, गैप आइडेंटिफाई करना है, उस गैप को आइंदा फिल करने की कोशिश करनी है। अगर कोई अनटूवर्ड अनवांटेड एक्सपीरियंस हुआ तो उससे उसको आइंदा से अवॉइड करना है और नई चीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हुए आगे लेके चलना है। दिस इज बेसिकली द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस टू आवर ongoing practice. We have to decide about our future. Experiential learning, that is about experiences. It is more specifically defined as learning through reflection on doing. So learning by doing what you did, what you do, and what are the results. On the basis of that experience, you implement the things. Experiential learning is distinct from rote or didactic learning, in which the learner plays a comparatively passive role. लर्नर का रोल एक्टिव रोल नहीं होता, पैसिव होता है, लेकिन एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा होता है, खुद रोल प्ले नहीं कर रहा, डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंसेस को वॉच कर रहा है, देखता है, फिर उसमें जो मोर स्पेसिफिक टूवर्ड्स हिज मोटिव है उसको वो ऑप्ट कर लेता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पार्टिकुलरली ये एक एटीट्यूड है टूवर्ड्स लर्निंग इन विच लर्नर इज अपीयर टू take responsibility for his own learning. According to Brockett and Hamstra 1991, categories of self-directed learning are self-planned learning, self-teaching, autonomous learning, independent study, and distance education. Self-directed professional development. Self-directed learning, one should consider the following: topic selection decides when to start exploring, when to stop, and starting self-directed learning is related to a need of training programs, seminar, workshop activities, and conferences. You know, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में हम टॉपिक खुद सेलेक्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि उसको कब और कैसे एक्सप्लोर करना है और कहाँ उसको रोकना है। इसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कहाँ से शुरू हम कर सकते हैं, कोई हम ट्रेनिंग ले लेते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, वर्कशॉप्स एक्टिविटीज़ होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस, तो यहाँ पे खुद हम अपनी मेंटल अप्रोच के अकॉर्डिंग और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को लर्न करते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू मेन गोल, बेसिकली रीज़न या इसके बिहाइंड जो हिडन मोटिव होता है वो क्या है कि अपना रोल प्ले करना है, उसमें आपने कंट्रीब्यूट करना है। अलाउ लर्नर टू बिकम मोर सेल्फ डायरेक्टेड, इस सुपरविजन का एक ये भी रोल होता है। Expand the role of teacher, make them problem oriented, and take specific actions for learner. Involvement of many aspects of learner, support learner directly or indirectly. So through these 7 strategies, the self-directed professional development can be upgraded, people are motivated, and institutions are benefited directly.
There also there is also another concept that is self-monitoring. Self-monitoring is the capacity to observe or measure and evaluate one's behavior in an important component of executive functioning in human behavior. Activities in which information about one's teaching is documented or recorded in order to self-monitoring of language teaching. Here, the thing to do is lesson reports, audio recording, video recording, and then listening by themselves and highlighting the deficiencies and adding the things needed or removing the things unwanted from that audio or video. That is the self monitoring. Journal writing to disseminate your observations and reflections and thoughts about teaching, usually in the form of a notebook, book, electronic mod, किसी वर्ड और एक्सेल की फाइल में आप रख लेते हैं, ईमेल में रख लेते हैं, ड्राइव में रख लेते हैं, which serve as source of discussion, reflection or evaluation. A journal is a written record of your thoughts, experience, observations. We can say it also diary, divided within the times and days and weeks over the months as well. You can write it in your journal daily or only when you feel the urge. Goals and benefits of journal writing. इस तरह से जो हम नोट्स लेते हैं अपनी डायरी में लिखते हैं या जर्नल राइटिंग करते हैं उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं टुवर्ड्स डिस्कवरिंग मीनिंग, केयरिंग फॉर सेल्फ, मेकिंग कनेक्शंस, installing values, gaining perspectives, reflecting professional roles of ourselves, critical thinking skills develop होती हैं इससे, developing affective skills. Those are related with directly to the affective domain, improving skills. तो ये मिक्सअप है, ये हमारे गोल्स भी हैं जर्नल राइटिंग के और इनके बेनिफिट्स भी हैं. Analyzing critical incidents. No doubt when you are there to learn, when you are there to supervise the things and you have to guide yourself, you have to guide uh, the other people. So the incident taken place in different time spans, they are needed to be critically analyzed. What happens through this? That is, the critical incidents might be communication situation which the participants consider a problematic and confusing, even amusing. तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है, इसको एनालाइज करके आप देख सकते हैं और गाइड कर सकते हैं, वहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं. क्रिटिकल incidents are occasions that stay in mind. Typically, critical incidents consist of examples of culture clash events, situations where unexpected behavior occurs with suggestions on how to solve these situations. So, where there is the arguments and there is not consensus among the speakers and people, that situation is the critical incident or situation. So उसको एनालाइज किया जाना चाहिए. Critical incidents give us any type of lesson which is related to interpretation of the event. So उसको ऑब्जर्व करके हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वहाँ हमने क्या देखा, वैल्यू जजमेंट क्या हमारी, सिग्निफिकेंस मीनिंग ऑफ द इंसिडेंट क्या है, what happened, why it happened. All these questions are
answered while analyzing the situation or analyzing the incidents known as critical incidents. Teaching portfolios. Portfolios serves as a tool for reflection, a way to thoughtfully document teaching practices and progress towards goals. इसमें तो इन नटशेल उसका डे वन से स्टार्टअप से लेके फाइनल डे तक सारा रिकॉर्ड, तमाम किस्म की एक्टिविटीज, पार्टिसिपेशंस, अचीवमेंट्स, उसकी डेफिशिएंसीज, सक्सेसेस, ऑल थिंग्स डॉक्यूमेंट की जाती हैं. पोर्टफोलियो entries can inform professional growth plan. Richard and Farrell in 2005 defined as a collection of documents and other items that provides information about different aspects of teachers' work is called portfolio. ये teaching portfolio of the teachers, from where they are examined, they are evaluated. It's also a component of supervision. Portfolio is a valuable aid in professional development of three important reasons: level of personal investment, preparation of portfolio, discipline-based pedagogy broadly, the habit of keeping teaching portfolios empower teachers with reflective strategies to help understand themselves. So the teaching portfolio जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में रोल है, उसकी इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी ये है, ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट है. और जितनी इसकी प्रिपरेशन बेटर की गई होगी, उतना ये ज़्यादा डिसिप्लिन बेस्ड होगा. उसमें टीचर की पेडागोजी से मुतल्लिक हैबिट ऑफ कीपिंग टीचिंग पोर्टफोलियो एम्पावर टीचर्स टू विद रिफ्लेक्टिव, क्योंकि जब उसने पोर्टफोलियो में चीज़ें लिख के रखी हैं, आगे उसने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस के रिफ्लेक्शंस को अपने उस पोर्टफोलियो से मैच करते हुए उसको एम्पावर करता है, सपोर्ट करता है कि अप टू व्हाट एक्सटेंट दे वर to the point, and strategies, whatever the strategies were not to the point they can understand about them. That's why uh, if you do have some questions, I think so you must have questions. Listen it, write your questions, come on Google Meet for online discussion. Thank you. Allah Hafiz.